Namaskar. Very warm welcome to all our viewers and learners in this live phone-in session of CIET NCERT. I am Renu Bhatt with you all, and you are watching us live on eVidya channels, channel number 6 and 11. And apart from these channels, you are with us on our YouTube channel as well, that is NCERT Official. आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं रेणु भट्ट अपने इस खास सेशन में जिसका नाम है मनोदर्पण परिचर्चा, जिसमें हम बात करते हैं बच्चों के मेंटल वेलबींग पर एंड वी ट्राई टू प्रोवाइड देम साइकोसोशल सपोर्ट एज वेल एंड इट्स अ वेरी स्पेशल इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जिसके बारे में आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं थ्रू आर वेरियस मीडियम्स, वो भी मैं आप सभी के साथ साझा करती हूँ। अगर आप मनोदर्पण के बारे में कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी एक डेडिकेटेड वेबसाइट है जो है www.manodarpan.education.gov.in और इस पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग का हिस्सा हैं हमारे फेसबुक पेज पर तो आप वहां पर भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है NCERT और यहाँ इन सब दोनों माध्यमों के अलावा आप हमसे जुड़े हुए हमारे यूट्यूब चैनल जैसा कि मैंने आपको बताया और हमारे चैनल पर 6 और 11 पर। और इसके साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूं हमारा आज का टॉपिक। हम आज बात करने वाले हैं फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ सिग्निफिकेंस ड्यूरिंग एंड आफ्टर एग्जामिनेशन पार्ट सेकंड। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड about it on part first and you can explore our NCERT official YouTube channel for that particular session। और हम अपने सभी देखने वालों को बताएं कि अपनी सभी क्वेरीज के साथ आप इस सेशन में जुड़ सकते हैं क्योंकि हम ये सत्र आप सभी के लिए लेकर आए हैं। और हम सभी को पता है कि एग्जामिनेशन एक ऐसा टाइम होता है जो काफ़ी टायरिंग और स्ट्रेसफुल होता है, तो किस तरह से आप उससे निकल सकते हैं। ना केवल आप अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ की केयर करें एग्जामिनेशन के दौरान बल्कि उसके बाद भी, क्योंकि उसके बाद का जो रास्ता होता है वो थोड़ा और टफ हो जाता है। और इस पर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टीम्ड पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। और हम सबसे पहले मुलाकात करना चाहेंगे हमारे पैनलिस्ट से, हमारे एक्सपर्ट से। आप हैं डॉक्टर सारिका सी साजू। यू आर एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन NCERT भोपाल। वेरी वार्म वेलकम मैम। थैंक यू। नमस्कार। नमस्ते मैम। और हमारे साथ हैं डॉक्टर दक्षा एम परमार। यू आर असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम RIE NCERT भोपाल। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अवनी पराशर। आप PGT गाइडेंस एंड काउंसलिंग हैं DMS RIE भोपाल से। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। नमस्कार। और डॉक्टर प्रतीक चौरसिया। यू आर असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मिजोरम यूनिवर्सिटी। वेरी वार्म वेलकम सर। थैंक यू मैम। नमस्कार टू ऑल व्यूअर्स। और हमारे साथ हैं हमारी पैनलिस्ट मिस सौम्या साहू। यू आर प्रैक्टिसिंग काउंसलर फ्रॉम भोपाल। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नमस्ते। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और अपने सभी देखने वाले को हम बता दें कि इन केस यू वांट टू आस्क समथिंग फ्रॉम आवर एक्सपर्ट और यू हैव समथिंग टू शेयर विद अस, फील फ्री टू कनेक्ट टू अस थ्रू आवर वेरियस मीडियम्स। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पे जो है 8800440559। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि मनोदर्पण के एक नेशनल टेली हेल्पलाइन नंबर है, दैट इज़ 8448440632। आप इसमें कॉल कर सकते हैं। और आप हमें हमारे YouTube चैनल पे यानी कि NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल के लाइव चैट बॉक्स में जाके कमेंट भी ड्रॉप कर सकते हैं। ये तमाम माध्यम है हमसे जुड़ने का और हम चाहते हैं कि आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज के साथ हमसे जुड़ें ताकि आप अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आप हमारे एक्सपर्ट से उनका सोल्यूशंस पाएं। और बिफोर आई बिगिन दिस पर्टिकुलर एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, लेट मी शेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विद यू ऑल रिगार्डिंग India's G20 presidency. We are indeed very proud that India assumed G20 presidency and will convene the G20's Leaders Summit for the first time in the country in 2023. A nation that deeply committed towards democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all. And in doing so, manifest the true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, or we can say the whole world is one family. With that very important piece of information, let's quickly start this session. और हम डॉक्टर अवनी मैम आपके पास आना चाहेंगे। हम बात कर रहे हैं फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग एग्जामिनेशन पार्ट सेकंड पर। पार्ट फर्स्ट पे हम बात कर चुके हैं और जब हम बात करते हैं फिजिकल और मेंटल हेल्थ की तो इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, हम ये आपसे जानना चाहेंगे। और कुछ सजेशंस भी हम आपका जानना चाहेंगे मैम जो आप सभी स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच रेणु जी। बिल्कुल सही कहा आपने। एग्जामिनेशन एक टर्म है और उसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ की।
देखिए, एग्जामिनेशन मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स ऐसा ना समझें कि सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर देना है और हमें आंसर शीट में उनके आंसर्स लिखने हैं। हमारा जो मकसद है, जो एम है, आपको एज एन इंडिविजुअल एम्पावर करना कि आप लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, बैरियर्स हैं, डिफिकल्टीज हैं, उन्हें एज अ थ्रेट ना लेते हुए, अपॉर्चुनिटी मानते हुए, एक टास्क के रूप में लेते हुए, एक चैलेंज के रूप में लेते हुए उसे डील करें और आगे बढ़ें। तो जैसा आपने बताया कि G20 इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर ईच एंड एवरी इंडियन की अभी होने वाला है, हो रहा है, और सो मेनी डेलीगेट्स आर देयर एंड वी आर डिस्कसिंग ऑन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो जैसे एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत बड़ी टीम लगती है, टीम वर्क होता है, हार्ड वर्क होता है, कमिटमेंट है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है। और कभी आप इतना बड़ा एक इंटरनेशनल इवेंट है, या अगर हम देखें कि हमारे घर में कोई आने वाला है, तो किस तरह से आप उसके लिए भी प्रिपरेशन करते हैं। सो द थिंग इज दैट कि इफ वी आर वेल प्रिपेयर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, तो हम कोई भी टास्क है उसे अच्छे से अकम्प्लिश कर सकते हैं। एग्जामिनेशन एक इवेल्युएशन है आपका। यहाँ जरूरी है कि हम उस सब्जेक्ट को अच्छे से समझें और जानें। अब इस एग्जामिनेशन को अगर हम एक टास्क लेते हैं, एक चैलेंज लेते हैं और उससे डील करने के लिए हम तैयार हैं, तो इन सब में सबसे ज्यादा काम आने वाली हमारी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे टिप्स, सजेशंस आपने देखे होंगे, सुने होंगे। हमारे पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, काउंसलर्स, रिलेटिव सब बोलते हैं कि भाई आपको हेल्दी फूड, न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए, योगा, मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज करनी चाहिए, आप इस तरह से हेल्दी हो सकते हो। लेकिन जब तक स्टूडेंट्स ये नहीं समझेंगे कि हमें ये सब क्यों करना चाहिए, what is the importance behind that, what is the reason why we are doing, पेरेंट्स कहते हैं कि पढ़ना चाहिए, लेकिन बच्चे को ये नहीं मालूम कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। सो दैट पर्पस, दैट गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ child knows the purpose behind that, then only he will be able to do his best. Now, जैसा आपने देखा कि अब उसे पर्पस मालूम है, कई बार इंटरनल मोटिवेशन हो सकता है या एक्सटर्नल मोटिवेशन हो सकता है। तो कई बार हम सोचते हैं कि ठीक है, वी आर स्टडिंग एंड टेकिंग एग्जाम्स जस्ट फॉर द पेरेंट्स, ओके, या आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, ओके, या आप अच्छी जॉब चाहते हैं, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी चाहते हैं। सो देयर आर मेनी रीजंस। जरूरी नहीं है कि एक स्टूडेंट का एग्जाम देने का पर्पस एक ही हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आप इस कंट्री के लिए, इस सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो सो मेनी मोटिवेशन आर देयर जिसके कारण स्टूडेंट्स अच्छे से एग्जाम्स कर सकते हैं। नाउ, करने के लिए हमें फिजिकल और मेंटल हेल्थ प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। तो इसके बहुत सारे जो टिप्स हैं वो आगे एक्सपर्ट्स हमें देंगे, लेकिन अगर हम एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं एग्जामिनेशन के लिए, तो बट ऑफ कोर्स हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ उस पर बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अब कैसे हेल्पफुल है, देखिए, कोई भी एग्जाम आपको प्रिपेयर करना है तो बट ऑफ कोर्स जो हमारा टाइम टेबल है, जो टाइम मैनेजमेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज को एनालाइज करना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, रीजन आउट करना, और फिर ये पूरा एनालिसिस करके एक डिसीजन लेना, तो ये सारी चीजें कौन करेगा, बट ऑफ कोर्स हमारा माइंड। तो जब हमारा माइंड स्ट्रांग रहेगा, जब हम मेंटल हेल्दी रहेंगे, तभी हम इतनी सारी चीजें एक साथ कर पाएंगे। बहुत स्ट्रेसफुल है, हम सब जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स बहुत स्ट्रेसफुल हैं, लेकिन मेरा मानना है कि लाइफ इज फुल ऑफ एग्जामिनेशंस। बहुत सारे ऐसे बैरियर्स आएंगे आपके पास, और उनको किस तरह से आपको पास करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए फिजिकल और मेंटल हेल्थ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो जब हम उसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं, तभी हम उस पर वर्क करते हैं। अदरवाइज जितनी भी एडवाइसेस और सजेशंस आपको मिलेंगे, वो वर्कआउट नहीं करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ आपको सजेस्ट कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स और टीचर्स आपको सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन करना किसे है, करना स्टूडेंट्स को है। तो हम उसकी इंपॉर्टेंस समझें, अपनी लाइफ में इन सब चीजों की इंपॉर्टेंस समझें, तो हम उसको अच्छे से कर सकते हैं। सो दैट पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि हम कहीं, आप चाहते हैं कि चलिए हम कहीं घूमने जाते हैं, और आपने डेस्टिनेशन डिसाइड कर लिया, ओके वी विल गो देयर, बट अब आपके घर से उस डेस्टिनेशन तक आपने रिजर्वेशन करवाया है, किस ट्रेन से, फ्लाइट से, बस से,
कैसे आप जाएंगे, वहां पर आप क्या क्या करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप उस डेस्टिनेशन पर पहुंच तो गए लेकिन अब क्या करना हमें मालूम नहीं है। आपको मालूम है कि हम कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वहां पर कौन सी फेमस प्लेसेस हैं जो आप विजिट कर सकते हैं, और आपने अपना रिटर्निंग तक का सारा प्लानिंग कर रखा है। तो ऐसी ही हमारी लाइफ है, ऐसे ही हमारे एग्जामिनेशन है। हमें डेस्टिनेशन मालूम है लेकिन उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए जो एक विल पावर होनी चाहिए, दैट इज लिटिल बिट लैकिंग इन स्टूडेंट्स। तो वो जब आ जाती है कि यस नाउ इट इज द एग्जामिनेशन एंड आई हैव टू like I'm prepared for it, I'm ready to take this challenge, then only they will work in a proper manner. तो जो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क है वो फिजिकल और मेंटल हेल्थ करना ही हमें सिखाता है। The next thing is that you have to come out of your comfort zone. अब वो हार्ड वर्क सिर्फ यहां से नहीं, हमें एक्शंस के थ्रू भी करना पड़ेगा। तो दैट हार्ड वर्क एंड कमिटमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कहते हैं कि जब हमें कुछ अचीव करना है, यू नो देयर वी कांट गेन विदाउट पेन। तो कुछ गेन करने के लिए थोड़ा सा पेन तो होगा ही, लेकिन अगर वही चीज हमारी वेल ऑर्गेनाइज्ड होगी तो वो हम जल्दी अपना टाइमली अचीव कर पाएंगे। देन एग्जामिनेशंस आर अ मिशन। आप ये समझ लीजिए, इससे डरने की जरूरत नहीं है। Please don't get afraid of it. It is a mission, and to accomplish that mission, you need a proper vision. तो हम हर मिशन को अकम्प्लिश कर सकते हैं अगर हमारे पास एक प्रॉपर विजन है, और उसके लिए भी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का होना बहुत जरूरी है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी पेरेंट्स से, टीचर से और स्टूडेंट्स से कि वो इसकी इम्पोर्टेंस समझें। When you know the importance कि yes it is important, जैसे कोई हमारी प्रेशियस थिंग होती है तो हम कितने संभाल कर उसको रखते हैं, तो वैसे ही दिस लाइफ इज वेरी प्रेशियस एंड एग्जामिनेशंस आर दे आर नॉट द अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ। एग्जाम्स तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, तो हमें हर चीज के लिए तैयार रहना है। इट इज जस्ट अ माइलस्टोन, एक खूबसूरत गोल है, लेकिन किस पाथ से आपको जाना है, कैसे जाना है, उसको हमें डिसाइड करना है। सो इफ यू हैव दैट पर्पस देन you can achieve it more nicely. And last में मैं ये कहना चाहूंगी कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ ना केवल स्टूडेंट्स की, I really request parents and teachers also, it is very stressful for them also. तो स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी बहुत स्ट्रेसफुल है, टीचर्स के लिए भी स्ट्रेसफुल है। तो वो भी अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड हैं। पेरेंट्स की क्वेरीज हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो कैसे डील करना है। पेरेंट्स को भी कूल एंड काम रहकर उन्हें समझाना है। अगर कोई पेपर अच्छा नहीं हुआ तो किस तरह से उन्हें काम करते हुए नेक्स्ट पेपर के लिए प्रिपेयर रहें, रिजल्ट के लिए प्रिपेयर रहें। और कोई भी रिजल्ट आए तो पेरेंट्स और टीचर्स को हमेशा ये एक बात कहनी चाहिए कि वट एवर मे बी द रिजल्ट, वी ऑल आर विद यू। सो जो अनकंडीशनल लव है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी के लिए आई really say all the best to all the students, parents and teachers also, कि वो अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। तो मुझे यकीन है कि ये जो एग्जामिनेशंस हैं वो बहुत अच्छे से होंगे और रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा। और नॉट ओनली दिस रिजल्ट, आगे भी जो आप प्लान कर पाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ एग्जामिनेशन की प्लानिंग नहीं, लाइफ लॉन्ग प्लानिंग है, जिसमें मेंटल और फिजिकल वेलबींग आपका जरूर साथ देगा। थैंक यू जी, थैंक यू सो वेरी मच मैम। एंड वी हैव इन थोड़ा टाइम हमारे पास और है आपसे बात करने के लिए, और यहाँ पे हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे। जैसे आपने कहा कि बच्चों के लिए ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लाइफ में काफ़ी एग्ज़ाम्स और आने वाले हैं आगे, और उनके लिए बच्चों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और पेरेंट्स को भी समझना चाहिए चीज़ें। क्योंकि पेरेंट्स, अगर हम देखें तो जितना स्ट्रेस बच्चों पे होता है उतना स्ट्रेस पेरेंट्स पे भी होता है, और जो एटमॉस्फेयर है वो कुल मिला के स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो यहाँ पे हम जब ये देखते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों से कई बार उम्मीद रखते हैं, कई बार नहीं रखते, लेकिन फिर भी उनकी उम्मीद तो कुछ ना कुछ होती है। यहाँ पे बच्चे उनसे कैसे कॉप अप करें, क्या आप उनको सजेशंस देना चाहेंगे कि अपने एग्जामिनेशन के बाद जब रिजल्ट का टाइम आता है और उसके बाद जब और चीज़ें लाइफ में स्टार्ट होती हैं, तो बच्चे क्या करें मैम, किस मेंटालिटी या एटीट्यूड के साथ वो चीज़ें शुरू करें? Thank you, Renu ji. A very important question. Even my daughter is in class 10, तो as a parent भी मैं समझ सकती हूँ कि क्या क्या स्ट्रेस और किस कंडीशन से एक पेरेंट they are going through.
बट एक चीज हमेशा याद रखिए कि ये जो एक पेपर आपका लाइफ का डिसीजन नहीं कर सकता। इट इज मोर, मैं हमेशा कहती हूँ, दिस इज ओनली एक ठहराव है लाइफ का। आगे हमें और बहुत सारे एग्जामिनेशंस पास करने हैं, लेकिन एक इमेज बन जाती है, एक सोशल प्रेस्टीज रहता है, स्कूल्स का भी एक सोशल प्रेस्टीज रहता है कि यस कि हमारे इतने स्टूडेंट्स मेरिट में आए हैं। पेरेंट्स का भी एक सोशल प्रेशर रहता है, पीयर प्रेशर रहता है। तो आई कैन वेल अंडरस्टैंड कि अगर वो थोड़ा सा प्रेशराइज कर रहे हैं अपने बच्चों को, तो वो किस तरह की उनकी भी मेंटल उनकी सोच क्या हो। जी। लेकिन ऐसे समय में व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द सोसाइटी और योर चाइल्ड। अगर उसे एक फ्री एनवायरनमेंट मिलेगा, उसे लगेगा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सोसाइटी की वजह से नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी वजह से पढ़ रहा हूँ, या पेरेंट्स मुझे हेल्प कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उसका नजरिया चेंज होगा। वो भी एक लाइफ के लिए उसको चैलेंज के, जैसे मैंने कहा कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेगा। अगर हम बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर देंगे किसी चीज को, आप प्रेशर प्रेशर करते जा रहे हैं, तो बर्स्ट आउट होना बहुत जरूरी हो जाता है कि वो बर्स्ट आउट हो जाएगा। आप कितना प्रेशराइज करेंगे। तो प्रेशर डीलिंग, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, वो भी बहुत जरूरी है। तो एज अ पेरेंट भी मैं सभी पेरेंट्स से ये बोलना चाहूंगी कि यस, जैसे मैंने कहा कि अनकंडीशनल लव, कुछ कुछ भी रिजल्ट हो, वी आर देयर फॉर यू। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कई एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं कि बच्चों की सुसाइडल टेंडेंसीज हो जाती हैं, रिजल्ट भी नहीं आ पाता, उन्हें लगता है कि मेरा पेपर नहीं अच्छा गया, या मैंने इतना अच्छा पेपर नहीं किया जो मेरे पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस हैं, तो वो ऐसा गलत कदम उठा लेते हैं। सो लाइफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, एंड एग्जामिनेशंस है वो एक इवेल्युएशन है। बट ऑफ कोर्स अगर आप यहाँ, हो सकता है कुछ कंडीशंस ऐसी रही हो, सिचुएशन ऐसे रहे हो, या अगर बच्चा शुरू से नहीं पढ़ा है तो उसका एग्जाम नहीं अच्छा होगा। देखिए, एज अ पेरेंट हमें मालूम रहता है कि हमारे बच्चे के कितने परसेंटेज आएंगे, कैसा पेपर हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग वी नो। सो समटाइम्स आवर एक्सपेक्टेशन शुड मैच द हार्ड वर्क ऑफ आवर चाइल्ड। वी नो दैट हाउ मच ही और शी कैन अचीव। तो अगर हम उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे, तो दैट विल बी मच मोर बेटर फॉर ऑल द पेरेंट्स। एग्जैक्टली और हमें उन सभी चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच मैम, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे सभी व्यूवर्स के साथ शेयर की। और अब हम आगे बढ़ना चाहेंगे, अपने दूसरे पैनलिस्ट के पास जाएंगे। दक्षा मैम, हम आपके पास आएंगे। हम बात करें फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ की ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले हम आपसे ही जान लेते हैं कि मैम, अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो व्हाट एग्जैक्टली मेंटल हेल्थ इज। मैम प्लीज एक्सप्लेन। Thank you so much, Renu ma'am. As the tone is set by Avni madam, and she has put in some very valid points. So right now, as we know, that children are facing examination, and they have put in their best foot forward, and they have worked for almost more than a year. So right now, they are facing the examination, be it board or other. And as per since I was going through some sites of CBSE and others. So right now we are having board examination, and in class 10th, it's 21.8 lakh students have enrolled in CBSE. And for class 12, 16.9 lakh students have enrolled. So see the enormity of just one board of the country. And there are n number of boards which are prevailing in the country, and everyone is facing the examination. Besides this, India's education system is one of the largest in the world. With in India, more than 26.5 crores of students are just at the school level. So right now, all of them are facing examination. So जाहिर है stress तो होगा ही. Ma'am, can I have my first slide, please? Sure, ma'am. Coming to what is mental health. अगर हम mental health की बात कर रहे हैं, तो mental health includes our emotional, psychological, and social well-being. It affects how we think, feel, and act. It also helps determine how we handle stress. As I said, since the students are facing examination, so stress automatically comes with the stress comes automatically with the examination. So mental health determines how we handle stress, relate to others, and make choices. So mental health is a state of well-being in which individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively, and is able to make contribution to his or her community.
Mental health is very important at every phase of life, starting from childhood onwards to adolescence to adulthood. So, mental health is an integral part of health. Indeed, there is no health without mental health. According to the World Health Organization, WHO has included mental well being in the definition of health. So, mental health is determined by a range of socioeconomic, biological, and environmental factors. So, mental health is more than the absence of mental disorders. Ma'am, next slide, please. Ma'am, next slide, please. Coming to what is mental health challenge. So when our mental health is not what we would want it to be, we find it difficult to manage how we think, feel, act with respect to daily stresses. So thus it is very important to remember that mental health is common during stress and anxiety. See, stress and anxiety goes hand in hand. People do take one name in place of other. So mental health is common during stress and anxiety, which is caused majorly by examination in adolescence. Right now, we are focusing on adolescence. So it is not only that there are only challenges. Once we meet these challenges, there are certain benefits also. So the benefits of coming up against challenge. Ma'am, previous slide. Previous slide, ma'am. हम पीछे की स्लाइड्स में जाना चाहेंगे जी बस एक स्लाइड और पीछे. Yes, so I'm talking about the benefits of coming against challenges. So when you face these challenges, it increases your determination, strength, patience, endurance, and your efforts. Next slide, please. All the students are faced with examination, and stress automatically comes with examination. So exam stress can affect how we think, feel, and behave. You might experience different things before, during, and after your exams. So when feeling of stress becomes too much to manage, see, if we face stress in certain amount, it will definitely add to our efficiency. But if it becomes too much, this can affect our mental health. So stress can also make existing mental health problems feel harder to cope with. So practicing stress reduction techniques such as meditation, deep breathing, and exercising can also help. Next slide, please. So there are certain physiological phenomenon which occurs with the stress. In our eyes, the pupils dilate to take in as much light as possible. Certain non-essential systems such as immune system and digestion turns themselves off to allow more energy, and veins in the skin constrict, which keeps the blood in the major muscle group. So these are all the symptoms of stress. We sweat a lot, so our body doesn't get too hot. It becomes difficult to focus on small tasks since our brain is preoccupied with stress. So this is why when certain instructions are given in the examination hall, students don't tend to pay attention to these instructions. That is because our brain is preoccupied with the stress or the fear of examination. Next slide, please. So stress impact our thinking and decision making in negative ways, leaving us tense and alert and susceptible to intense emotion and impulsive reaction. As I have already stated that stress and anxiety goes hand in hand, and people often confuse one with the other. So when I say that stress impacts our thinking and decision making in negative ways, leaving us tense and alert and susceptible to intense emotion and impulsive reaction, stress is always associated with some external trigger, or we call it as stressor. Whereas anxiety is the body's response to that stress. So stress and anxiety share some common symptoms, making it difficult to tell them apart, and can be clubbed under these three categories, namely emotional, cognitive, and physical. When we say that physical symptoms, so physical symptoms are include headache, sweating, burning of eyes, then nausea, sleeplessness, or excessive sleep. Mm, either lack of appetite or very much feeling hungry, and with the
increase in heart rate and blood pressure. So these are all physical symptoms which are associated with the stress. Coming to emotional symptoms, so emotional symptoms, we are not able to focus on studies. We are always worried about examination. Then what we always are in a fearful mode, that what will happen in my examination. Anxious thoughts continuously comes in. Then another category is cognitive. So cognitive is when we are not able to concentrate on one particular subject, or we are not able to focus our attention. There is difficulty in remembering things. We are always in a state of confusion. So these are the symptoms that a person shows when he or she is under stress and anxiety. So these are the common symptoms of stress and anxiety. And next slide, please. Cause of exam stress. As I said, the cause of exam stress can be broadly considered categorized under lack of preparation. Why? Because no matter how much you have studied, you always feel that you have not prepared enough. So you feel that you lack preparation. Though we have studied for the entire year or for the entire semester, still we feel that we lack preparation. There is enormous pressure, as Avni madam was saying, that there is always pressure either from the parent side, or the students themselves take pressure, that without knowing the capability, they think they want to achieve this much. So there is enormous pressure, or it can be the pressure from the peers also. So if my friend is achieving this much percentage, even I should get this much percentage. No, I know I should know my capability, I should know my caliber, and then only I should assume certain according to my capability, I should assume that this much percentage I should get. Then there is always a self doubt. So whether we have studied or not, I mean, there is always self doubt whether my exam will go nice, or whether I'll be able to write properly whatever I have studied, whether it will come from that portion only or not. So there is always a self doubt remains with the student. Then there is always a fear of failure. So fear of failure, as Avni madam also has said, that it is only just an exam, it is not your life. So even if you fail, it is just an exam. You can reappear in that. Though there is always social stigma associated with the failure, but that is not your end of the life. Ma'am, next slide, please. So there are certain symptoms of stress. Stress can manifest in signs similar to anxiety, and also shows up as digestive problems, menstrual problems, general unhappiness, irritability or anger. There are mood swings or mood changes. Then there is nausea, muscle tension. So these are all the symptoms of stress. Ma'am, next slide, please. Ma'am, next slide, please. Previous one. Previous one. Then there are anxious thoughts. You feel low energy, you feel loneliness, there is always headache, dizziness. Then there is excess of weight change. I mean, either the students gain weight or they lose weight. So there is weight changes. There's high blood pressure. Then poor self-care and trouble in remembering things. So these are the symptoms of stress. Next slide, please. So as I said, that stress and anxiety are interchangeable, or the people do often confuse one with the other. So stress and anxiety are both a part of body's natural fight or flight mechanism. When someone feels under threat, signals are sent out by the brain to release stress hormones like adrenaline, which is also called as epinephrine, because it is secreted by adrenal glands. So stress hormone causes the heart to beat faster, resulting in increased heart rate, and blood pressure goes up, resulting in more blood pumping to the organs and limbs. As I said, that it is a fight or flight mechanism. So you need more pumping in the organs or limbs to either fly away from the scene, or you have to fight for it, or fight with it. So body releases nutrients into the blood to ensure all parts have the energy that they need. This response allows the person to be ready to either fly, fight, or run away. So the fight or flight response helps the body face stressful situations. So fearing failure can make you try to do well. But as I said, that there is also a limitation. If you fright too much, so that fearing failure can make you try to do well, so that you won't fail. But if it can also stop you from doing well, if the feeling is too strong. Next slide, please.
Coming to anxiety. So approaching the examination hall brings a feeling of churning stomach and anxiety. In fact, any situation which involves performing a task and the awareness of being evaluated for the performance is an anxiety provoking situation for most of the people. So some people are likely to suffer more from the exam anxiety in comparison to others. See, my tolerance capacity or my anxiety taking capacity is different from Sarika madam or is different from Prateek sir. So likewise, every person has different capability to deal with the exam anxiety. So according to a recent survey by NCRT, 81% students have attributed study, exam and result as the major cause of anxiety. Ma'am, next slide. So many people will recognize anxiety as the feeling of distress, uneasiness, or dread that someone has before a significant event. It keeps them alert and aware. Anxiety leads to a near identical set of symptoms as stress. As I said before also, that anxiety and stress are interrelated and it is taken one in place of other. So anxiety leads to a near identical symptoms as stress like insomnia, difficulty concentrating, fatigue, muscle tension, and irritability. The fight or response can kick in when someone faces a physical or emotional. By emotional, I mean real or perceived threat. When while it can be useful for some, it can interfere with the daily life course with everyday life for others. So tends to be a short term and in response to a recognized threat. As I said, that stress is always in response to some stressor, which is a potential threat. Whereas anxiety can linger and can sometimes be seen as if nothing is triggering it. So it is just our body mechanism to that stress. Ma'am, next. So Ma'am, these are the, yeah, 2 minutes left, ma'am. okay, fine. So these are the symptoms of anxiety. That is increased irritability, restlessness, feeling of unease or dread, intense uncontrollable worry with or without external trigger, shortness of breath, panic attack, concentration difficulty, or difficulty in falling asleep and sleeping for too long. Next slide, please. So these are the problems faced by the students. That is time management, low motivation. There are too many distractions. You have difficulty concentrating and dealing with the depression. Ma'am, next slide. Ma'am, next slide. So these are the certain academic challenges or the academic difficulties. When we know that we have not attended the classes properly, then there is always a gap in our knowledge and there is this difficulty in grasping our course material. If we have poor study habits, why? Because we lack some study plan or strategy. We have difficulty planning and organizing to complete our study task. Then there is test anxiety that leads to poor performance in exams. We are not sure how to approach the exam questions. I might have studied well, but I do not know how to approach and how to write the exam questions in order to get maximum marks. Then there is lack of exam management skills and of course exam anxiety. My next slide. So there are certain ways to overcome these challenges. One is to stay confident and optimistic. Be prepared with exam preparation in advance. So you can set your own timetable. Be a good time manager. You have to set in your time according to what is required in your preparation. Be it some subject or be it how much time you want to devote to certain subjects or in beforehand how much preparation is needed. Prepare a timetable according to your study habit. You might be an early riser or you might be a late waker. So accordingly prepare a timetable. Make wise choices when choosing friends because your friends will decide how you are going to utilize your time. Never compare yourself with anyone, be it your siblings or be it your peers. So never ever compare yourself with anyone. Then eliminate distraction. There may be a relative's marriage in the family or some other distraction. So just try to eliminate these distractions. Watch the clock. Allocate time to each subject as per the requirement and your preparation. Ma'am, next slide. Ma'am, please sum up. Yeah, next slide. So maintain a positive attitude. Be honest with your family. Stay connected with people who can keep you calm and make you happy. Provide emotional support and help you. Breathe through panic. Focus on calm breathing and positive thoughts. So face your fears.
don't pay attention to what other people are saying or doing. Eat properly, because your diet is very essential. Eat healthy, nutritious diet. Fall back on the power of positivity, talk about it, and use visualization techniques. You should imagine yourself sitting in the examination and your paper is going very well. So that visualization technique will help you in reaching your goal in a better way. Ma'am, last slide, please. So practice mindfulness, be aware of your thoughts, feeling, bodily sensation, and your surrounding environments. Take breaks, make time for movement. Many students sit at one place and study continuously. So take a nature walk. It is impossible to think clearly when you are flooded with fear or anxiety. Exercise, don't forget your self-care. Sleep well, because sleeps restore your bodily composition and restoration of bodily functions. So don't try to be perfect. Nobody is perfect, except that there are things that you cannot control, because many of things are beyond our control. See, examination, which examination is going to take place is beyond your control. How is it going to happen? That depends upon your preparation. So don't try to be perfect. राइट जब एग्जैक्ट वेरी राइटली सेड बाय मैम, आपने बहुत अच्छे से कहा कि डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। मैम दक्षा मैम ने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ और व्हाट इज़ स्ट्रेस एंड एग्जाइटी और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है और हाउ यू कैन ओवरकम ऑल दोज थिंग्स, आप किस तरह से इसे ओवरकम कर सकते हैं, ये भी आपको बहुत ही विस्तार से बताया गया। और मैम थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। अब हम अपने अगले एक्सपर्ट के पास जाना चाहेंगे। सारिका मैम, हम आपके पास आना चाहेंगे। ऐसे टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है फैमिली का और फ्रेंड्स का, तो वो हम आपसे जानना चाहेंगे कि फैमिली का रोल और जो पीयर्स का रोल होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है मैम। जी रेणु जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और ये जो हमारी लाइफ के बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं, हमारा परिवार और हमारे दोस्त, मतलब कि फैमिली और पीयर जो होता है, और सबसे क्लोजेस्ट हम जिसके होते हैं वो हमारा परिवार होता है। और कई बार एक ऐसी उम्र में, जैसे कि दक्षा मैम ने भी कहा और अभी मैम ने भी कहा कि हम एडोलेसेंस की बात कर रहे हैं, इस उम्र में जो बच्चे होते हैं, बच्चियां होती हैं, वो अपने दोस्तों के ज्यादा करीब होती हैं। और कई बातें ऐसी होती है जो अपने परिवार को नहीं बताते हैं लेकिन अपने दोस्तों को बताते हैं। तो ये जो स्ट्रेस का समय होता है, परीक्षा के समय, एग्जाम्स के टाइम, उसमें फैमिली और पीयर दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस वक्त जो हमारा परिवार है और जो हमारे पीयर है, वो एक सपोर्ट सिस्टम की तरह हमारे साथ रहे और वो सपोर्ट सिस्टम हमें हर तरह का सपोर्ट प्रदान करे। जैसे कि मैम ने बोला कि फिजिकल हेल्थ होती है, मेंटल हेल्थ होती है, इमोशनल हेल्थ होती है। तो जो हमारा परिवार और हमारा पीयर होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि नॉर्मल सिचुएशन में तो ठीक है, लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी परेशानी में होता है या किसी तरह की मानसिक तनाव से गुजर रहा होता है या किसी चैलेंज का सामना कर रहा होता है, तब हमारे लिए परिवार और पीयर की जो भूमिका है बहुत बड़ी हो जाती है। तो सबसे पहले, चूंकि हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं एग्जाम से रिलेटेड, मुझे लगता है कि सबसे पहले हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो स्ट्रेस है वो जो है वो एक नेचुरल चीज होती है। स्ट्रेस और जो टेंशन भी आप कह सकते हैं, तनाव कह सकते हैं, स्ट्रेस कह सकते हैं, वो एक नेचुरल चीज होती है। जैसे कि हमको भूख लगती है, जैसे कि हमको गुस्सा आता है ना, तो हम हमेशा कहते हैं कि गुस्से पे कंट्रोल करो, गुस्से पे कंट्रोल करो। तो हम ये नहीं कहते हैं कि गुस्से पे कंट्रोल करो, हम ये कहते हैं बेसिकली कि गुस्से को रेगुलेट हम कैसे करें। तो मुझे लगता है कि अगर हम समस्या को सही तरीके से पहचाने तो हम उसका सही इलाज कर सकते हैं। तो अगर हम स्टूडेंट्स को, विद्यार्थी को या अपने बच्ची को या बच्चे को ये कहते हैं कि स्ट्रेस मत लो, टेंशन मत करो, तो ये बात मुझे लगता है कि कहीं थोड़ी सी गलत होती है। हमको ये उसको बताना चाहिए कि जो स्ट्रेस होता है, जो टेंशन होती है, वो नेचुरल है। हम भी उस उम्र में अगर किसी साक्षात्कार के लिए जाते हैं या किसी विपरीत परिस्थिति का सामना करते हैं तो हमें भी स्ट्रेस होता है, हमें भी टेंशन होती है। बिकॉज जैसे कि दक्षा मैम ने बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सप्लेन किया कि हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो चेंजेस होते हैं, उस वजह से ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस और टेंशन होता है। तो सबसे पहले तो हमारे बच्चों को, बच्चियों को ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि जब भी कोई चुनौती हमारे सामने आती है तो हमें स्ट्रेस होता है। ठीक है, तो स्ट्रेस तो नेचुरल है, इट्स अ नेचुरल थिंग, यू जस्ट कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट।
But the main important point here is that how you are going to cope up with that stress, है ना? और उसके पहले that you must be able to understand कि आपको स्ट्रेस हो रहा है। तो स्ट्रेस हो रहा है तो किस चीज से हो रहा है? पहले तो किसी ने कहा कि मम्मा मुझे स्ट्रेस हो रहा है, या पापा मुझे स्ट्रेस हो रहा है, या किसी ने अपने फ्रेंड को बोला कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, एग्जाम आने वाली है, तो एग्जामिनेशन का स्ट्रेस हो रहा है। अब एग्जामिनेशन का स्ट्रेस हो रहा है तो क्यों हो रहा है? इस समय पर हमारा परिवार है, परिवार में हमारे जितने भी सदस्य हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स में भाई बहन हो सकते हैं, बड़ा छोटा, या और भी रिलेटिव्स हो सकते हैं आसपास, लेकिन क्लोजेस्ट जो होते हैं वो माँ बाप या सिबलिंग्स होते हैं, और पीयर्स भी बहुत क्लोज होते हैं। तो इस वक्त जो है परिवार की जो जिम्मेदारी है या परिवार की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे पहले तो परिवार का माहौल ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को, बच्चियों को ये लगे ना कि नॉर्मल सिचुएशन से हम किसी अलग तरह के वातावरण में अभी हम रह रहे हैं, और ये वातावरण तब तक चलेगा जब तक कि हमारी परीक्षा खत्म नहीं हो जाती। तो कई बार ऐसा होता है ना कि एग्जाम जैसे आती है तो पूरे घर में माहौल स्ट्रेसफुल हो जाता है, और जैसे एग्जाम खत्म होते हैं तो पूरे घर में बड़ा खुशी का माहौल आ जाता है कि अरे अब तो टेंशन खत्म हो गई। एज ए पेरेंट मैं भी इस चीज से बहुत बार गुजरी हूँ, और हम सब इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। हमारे कॉलेज में भी हम स्टूडेंट्स को देखते हैं कि एग्जामिनेशन टाइम में वो कितने स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, और एग्जाम पेपर खत्म होने के बाद दे आर लाइक फ्री बर्ड्स। तो मुझे लगता है कि इस कंट्रोल करने की जरूरत होती है परिवार को इस तरह का माहौल घर में क्रिएट करना चाहिए कि एग्जाम आने वाले हैं लेकिन दीज आर ऑल्सो नेचुरल टाइम। जैसे कि हम एग्जाम के 1 महीने पहले रहते हैं, 15 दिन पहले रहते हैं, उस टाइम भी हम इसी तरीके से रहेंगे। उस समय आप थोड़ी ज्यादा पढ़ाई करेंगे, हम आपका थोड़ा ज्यादा ध्यान रखेंगे, हम आपको हो सकता है कि अपने हाथ से खाना भी खिला दें, या आपकी ग्लास पे आपकी टेबल पे पानी का ग्लास भी ले आए, और हम घर में थोड़ी सी शांति बना के रखेंगे ताकि आपको पढ़ने में जो है डिस्टर्ब ना हो। तो घर का जो माहौल हो वो एकदम नेचुरल सेटिंग में होना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। अच्छा, जब हम स्ट्रेस फ्री माहौल की बात करते हैं तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि स्ट्रेस फ्री माहौल को दूर करने के लिए या नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जो टूल है वो कम्युनिकेशन है। और कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है, संवाद जिसे हम कहते हैं, जिससे बहुत सारी समस्याएं जो अपने आप दूर हो जाती हैं। और कई सारी समस्याएं और झगड़े और मन मुटाव इसी बात से होता है कि लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं करते हैं, या रॉन्ग कम्युनिकेशन हो जाता है। तो कम्युनिकेशन अगर पेरेंट्स और बच्चों के बीच में है, सिबलिंग्स के बीच में है, इट कैन वर्क एज अ प्रेशर रिलीज पॉइंटर्स, कि आपके मन में कुछ चीजें आ रही हैं तो आपने जाके अपनी बहन को बता दिया, अपने भाई को बता दिया, अपने पापा को बता दिया, अपनी मम्मी को बता दिया, या अपने दोस्तों को बता दिया। तो आपके मन में जो चुनौती का सामना करने का जो भय है वो निकल गया, आपने किसी से शेयर कर लिया। क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हम ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगर हमारे आसपास कोई नहीं है बात करने के लिए, क्योंकि हमको ह्यूमन बींग्स तो कहा जाता है लेकिन हमें सोशल ह्यूमन बींग्स कहा जाता है। ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स। बहुत पुरानी एक ये लाइन है कि मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा जाता है। तो मनुष्य को सामाजिक प्राणी क्यों कहा जाता है? क्योंकि मनुष्य कभी भी आइसोलेशन में नहीं रह सकता। मनुष्य को अपने आसपास अपने लोग चाहिए, बात करने के लिए, शेयर करने के लिए, इवन केयर करने के लिए भी है। आपने कभी ये भी देखा होगा कि घर में जो है कोई पेट्स भी होते हैं तो उससे भी हम लोग बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं। पेट्स ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जब प्रेशर रिलीज करने की बात आती है। तो वो लोग जो आपको प्यारे होते हैं, जिनके साथ आप एट ईज महसूस करते हैं, उनके साथ समय बिताना, उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताना, और उन लोगों को अपने मन की बातें बताना। तो सबसे पहले तो परिवार का ये पहली जिम्मेदारी होती है कि परीक्षा के समय को एक युद्ध जैसे माहौल में ना घर को बनाया जाए कि भाई हमारे बच्चे जो है वो तो मोर्चे पे। ये थोड़ी सी बात है, साल भर हमने पढ़ाई की, उस पढ़ाई का 15 या 20 दिन हमारा इवैल्यूएशन होने वाला है, और उसके लिए हम पूरी तैयारी से जाएंगे। तो ये तो एक पहली बात है। दूसरी जो हम बात करते हैं इसमें, फैमिली सोशल कैपिटल।
फैमिली सोशल कैपिटल का मतलब है कि परिवार में कितना कम्युनिकेशन होता है, परिवार में कितनी बॉन्डिंग है, और परिवार के सदस्यों के बीच एक दूसरे के कामों में कितना इन्वॉल्वमेंट है। कई बार क्या होता है कि एकेडमिक जो बच्चों का एस्पेक्ट होता है उसमें पेरेंट्स का या तो कम इन्वॉल्वमेंट होता है या जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, और एक बैलेंस्ड इन्वॉल्वमेंट होना एकेडमिक जो उनका एस्पेक्ट है बच्चों का, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार ये होता है कि ज्यादा इन्वॉल्व होने से या ज्यादा बार बार टोका टाकी करने से बच्चे जो है वो रिटेलिएट कर जाते हैं, थोड़ा सा चिढ़ जाते हैं, थोड़ा सा रिएक्ट कर देते हैं, और उनको लगता है कि हमें हर चीज पे टोका जा रहा है। तो एक बैलेंस्ड वे में इन्वॉल्वमेंट होना, और उनके फ्रेंड्स के बारे में भी जानना कि आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आपके फ्रेंड्स की पढ़ाई कैसी चल रही है, या अगर जो बच्चे हैं वो कलेक्टिव स्टडी करते हैं, आजकल कई बार बच्चे जो होता है कलेक्टिव स्टडी करते हैं। हमने देखा है अपने आसपास की कोविड टाइम में तो ऑनलाइन बहुत सारे बच्चे साथ में मिलकर कलेक्टिव स्टडी करते थे। तो कलेक्टिव स्टडी जब हमारे बच्चे करते हैं तो उस वक्त में वो कलेक्टिव स्टडी उनके कितने यूजफुल है, और उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनका समय जा रहा है या उसको कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फैमिली सोशल कैपिटल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसमें हमें लोगों के बीच में बॉन्डिंग, कम्युनिकेशन एंड इन्वॉल्वमेंट का पूरा पूरा ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अब अगर हम बात करें, जैसे अवनी मैम ने भी शुरू में बोला कि स्ट्रेसफुल टाइम तो होता है, स्टूडेंट्स के लिए तो होता है, लेकिन पेरेंट्स के लिए भी स्ट्रेसफुल टाइम होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि पेपर के एक दिन पहले हमारा बच्चा या बच्चे हमारे पास आके बोलती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, और मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है। जिस रक्षा मैम ने कहा कि स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस के रिजल्ट में हमको एंजाइटी होती है। एंजाइटी हो रही है क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं है, और मुझे जो याद था मैं वो सब कुछ भूल गई हूँ या मैं भूल गया हूँ, और मैं कैसे लिखूंगी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे मैं इस पेपर को सॉल्व करूंगा या करूंगी। तो उस वक्त पेरेंट्स भी क्या होता है रेणु जी की कभी कभी टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि देखिए हमेशा पेरेंट्स को ये सलाह दी जाती है कि आप अपने बच्चे की परसेंटेज के पीछे मत पड़िए, उसकी अपनी कैपेसिटी है, उसकी अपनी कैपेबिलिटी है, मार्क्स आर जस्ट नंबर। बहुत अच्छी बातें हैं ये, है ना, बहुत अच्छी लगती हैं सुनने में, और अमल में भी लाना इनको बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम पेरेंट्स के साइड से भी देखूं, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ पेरेंट, हमारे बच्चे को इसी सोसाइटी में रहना है, हमारे बच्चे को इसी सोसाइटी में कॉम्पीट करना है, और उसको इस सोसाइटी में रहने की स्किल्स भी आनी बहुत जरूरी है, और उसको थोड़ा बहुत कंपटीशन भी आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एट द सेम टाइम पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल समय होता है जब हमारे बच्चों को रिलैक्स भी रखना है, उसके इमोशनल मेंटल वेलबींग को भी इंटैक्ट रखना है, एट द सेम टाइम हमें उसे इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड के लिए तैयार भी करना है। ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है जो एज अ पेरेंट मैं बहुत बार फील करती हूँ कि हाँ बेटा कोई बात नहीं, कम नंबर आए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मेरे मन में अंदर ये डर होता है कि अगर कम नंबर आए तो फिर मेरा बच्चा कैसे इस सोसाइटी में आगे बढ़ेगा, कॉम्पीट करेगा। तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रश्न है। तो जो एग्जाम का समय होता है उस समय पेरेंट्स को भी बहुत धैर्य की जरूरत पड़ती है। पेरेंट्स उस समय अपने, जब जैसे बच्चा अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है, पेरेंट्स अपने आजू बाजू के सर्कल में देखते हैं कि भाई मेरे आजू बाजू का जो सर्कल है उसमें बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज एवरी सोसाइटी सेट्स अ रेफरेंस पॉइंट फॉर ईच एंड एवरीथिंग। कि 8वीं में 8th क्लास में बच्चों के कितने परसेंट आने चाहिए, 9th में कितने आने चाहिए, 10th में कितने आने चाहिए। 10th के परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि 11th में जाके आपको सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। 12th में आपके परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज दैट विल डिसाइड कि विच कॉलेज आपको एडमिशन देगा, आप किस कॉलेज में जाएंगे। तो ये जो समय होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट समय होता है। इस वक्त हम समाज की तरफ देखते हैं, पेरेंट समाज की तरफ देखता है कि समाज ने अपने क्या स्टैंडर्ड बना के रखे, और ये एक बहुत ही नेचुरल टेंडेंसी है किसी भी परिवार की और पेरेंट्स की कि वो ये चाहता है कि उसके बच्चे बच्चियां उस रेफरेंस रेंज के अंदर हो, उस रेफरेंस रेंज के बाहर ना हो, क्योंकि वो अपने बच्चे के भविष्य को लेके
सिक्योर फील करना चाहते हैं, अपने बच्चे को चाहते हैं कि उसकी जो जिंदगी आने वाली वो एक सुरक्षित और सिक्योर तरीके से चले, और उसके लिए कुछ अच्छी वोकेशन की जरूरत होती है। तो ये सारे हैं जो कि पेरेंट्स को प्रेशर में लाते हैं, और अल्टीमेटली समटाइम्स when parents are unable to deal with this pressure they pass to their children, and because of this pressure the children get stressful, and that stress results into anxiety. And this particular anxiety, it sometimes it disturbs and destructs everything, and this is the time when we need to understand that each and every child has her own strength. कोई इंग्लिश में अच्छा हो सकता है, कोई मैथ्स में अच्छा हो सकता है, कोई हिंदी में अच्छा हो सकता है, कोई सोशल साइंस में, कोई साइंस में अच्छा हो सकता है, किसी की ड्राइंग अच्छी होगी, किसी की राइटिंग अच्छी होगी, किसी का ओरल अच्छा होगा। सो आई थिंक सबसे पहली जरूरत हमको ये बात समझनी है कि every child is a diverse person. Every child has diverse capabilities and skills, and as a parent it is our responsibility to identify that particular strength of that child and enhance that, motivate that child into that particular sector or aspect. So that's why examination time is very stressful for children and as well as parents also. अगर हम peer की बात करें तो peer जो होता है, जैसे मैम ने बहुत अच्छी बात बोली, दक्षा मैम ने, कि आपका peer जो है बहुत important भूमिका निभाता है, स्पेशली एग्जाम टाइम में। सारिका मैम 2 minutes left मैम। ओके मैम, आई विल सम अप इन 2 minutes। एग्जाम टाइम में भी और ऐसे भी, क्योंकि अगर आपका पीयर आपके साथ है जो कि कंटिन्यूस स्टडी करता है, जो कंटिन्यूसली चीजों को कंप्लीट करता चला जाता है और रेगुलरिटी से पढ़ाई करता है और सिंसियरिटी से पढ़ाई करता है, तो उसको देख के आप भी मोटिवेट होते हैं। और आपने देखा होगा कि बच्चों में अक्सर ये कंपटीशन की भावना होती है कि उसके इतने परसेंटेज आए हैं तो मेरे कितने परसेंटेज आए हैं और मेरे भी इतने परसेंटेज आने चाहिए। तो डेफिनेटली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पीयर का सपोर्ट होना उस समय में, एग्जाम टाइम में, जब आपका पीयर आपको ये बोल के डीमोटिवेट ना करे कि अरे कोई बात नहीं, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो होगा कल देखी जाएगी। सो दिस इज अ नेगेटिव पुश बैक कि हमको स्ट्रेस नहीं हो रहा है, लेकिन हमको केयर भी नहीं है कि हमारा क्या होगा। दूसरी तरफ दूसरे लोग होते हैं कि नहीं, अगर आपका हो गया है तो हम एक बार और रिवीजन करेंगे, हम 2 बार और रिवीजन करेंगे, ताकि हम ये सुनिश्चित कर सके कि हमारा कल का पेपर बहुत अच्छा जाए। कई बार कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं कि अरे इसका पेपर लीक हो गया है, या इस तरह के सवाल आएंगे, तुम सिर्फ उतना सा पढ़ लो, मैम ने तो कहा था ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है और ये इस पोर्शन से ज्यादा सवाल आएंगे। तो इस तरह से पीयर जो है एक दूसरे को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। इसीलिए पॉजिटिव इन्फ्लुएंस फ्रॉम पीयर एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएशन फ्रॉम द फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम एग्जाम टाइम में तो इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एग्जाम टाइम जो कि बहुत स्ट्रेसफुल टाइम होता है, उस वक्त जो है हमारी पीयर्स की और पेरेंट्स की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जी, थैंक यू सो वेरी मच सारिका मैम, आपने इतने अच्छे से बताया। और जब हम देखते हैं एग्ज़ाम टाइम पे घर का माहौल स्ट्रेसफुल होता है, बच्चों को लेकर एक्स्ट्रा अटेंशन मिलने लगती है, बच्चों को एक्स्ट्रा केयर मिलने लगती है, जिससे कई बार उनका मूड भी थोड़ा अपसेट हो जाता है, या फिर उन्हें लगता है कि अचानक से ऐसा क्यों हो गया है। और आपने इतने अच्छे तरीके से बताया। हम अपने सभी देखने वालों को कहना चाहेंगे कि अगर कोई भी क्वेरी आपके मन में आ रही है तो आप हमें जुड़ सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800-440-559, या फिर अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं यानी कि NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हैं तो लाइव चैट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप करेंगे। आपके कमेंट्स हमें मिल रहे हैं, वी रियली अप्रिशिएट दैट। पर अगर आप अपनी कोई क्वेरी हम तक पहुंचाएंगे तो हमें और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम चाहते हैं कि आप अपनी क्वेरीज़ के साथ, सवालों के साथ हमसे जुड़ें। और यहाँ पर हम सौम्या मैम आपके पास आना चाहेंगे। हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो वाई इट्स सो इम्पॉर्टेंट, और मेंटल हेल्थ की इम्पॉर्टेंस के साथ साथ हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से मेंटल हेल्थ को हम मेंटेन कर सकते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। Okay, thank you so much. So, as we learned from all the speakers before this, कि mental health is very important. पहली चीज
एग्जाम्स में बहुत सारा स्ट्रेस आता है and it gets quite difficult to handle a lot of aspects of your life because exam वो एक central point बन जाता है around which your life revolves. So आप खाना अलग, सोना अलग, recreational activities अलग, everything focuses on just your exams. So let's see, can I have my PPT please? Sure, ma'am. Right. So now we'll learn about mental health and studies. So as we all know, high levels of mental health are associated with, increased retention, attention, creativity, and productivity, and which is quite normal, right? Which is quite a general thing to understand that when your mental health level is at optimal, your attention is, you are quite sharp, because as Daksha ma'am also explained that when you are during your exams, when your stress levels are high, your body goes into fight or flight mode, and when all your energy is going into just surviving, just focusing on very important tasks, बहुत सारी चीजें पीछे छूट जाती हैं. So it's very important to keep your mental health levels at optimal level during exams, right? So how do we maintain that mental health during exams? The first point is get appropriate rest. Everyone will say this, and everyone has emphasized on this, that getting appropriate rest is very important. It's like charging your cell phone at night so that you can use it again throughout the day, the entire time, because if you don't charge your cell phone, how will you use it the other day, right? Seek help. So what happens is that बहुत ज़्यादा एंजाइटी के इश्यूज आते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस, एंड the child feels that it's normal to feel this panic, this stressed out, and they don't ask help from anyone. It's important to confide in your parents or your friends or any mental health professional, because again, I like to remind you that mental health levels, affect your performance, whether it's socially, whether it's emotionally, whether it's physically, right? Ensure proper nutrition. Now, a good and healthy body would allow you to focus more, would allow you to, escape sickness or health issues, and, maintain your brain and give you enough energy to function quite nicely, right? Be kind to yourself. अब ऐसा बहुत बार होता है दैट दक्षा मैम ऑल्सो एक्सप्लेन, सारिका मैम ऑल्सो एक्सप्लेन, कि हमारे पास हमारे फ्रेंड्स का कॉल आ रहा है सेइंग दैट हमने तो 80% ऑफ द सिलेबस कर लिया एंड वी हैव कवर्ड दिस मच टिल नाउ, एंड you are on second or third chapter. It creates a sense of panic in you. अब मैं कैसे करूंगी? I need to cover 6 chapters in a day. I need to cover 8 chapters in a day. And you're stressing yourself out. See, again, I'll take the example of a mobile phone. अगर उसकी capacity एक limited उसमें है, it can perform that well only, right? It won't exceed that performance capacity. So you are unique, your capacities are unique. Work according to that. You know yourself the best, and उस हिसाब से schedule your goals as well. Right. And that comes to the fifth point: set realistic goals. Schedule portions of your syllabus that you feel you can cover in a day, rather than putting portions that you feel like you should be covering. So for example, if you can cover 3 chapters in a day, that's completely fine, rather than panicking and scheduling like 6 chapters in a day or 7 chapters in a day, because it would lead to much quicker completion of syllabus. Keep grounding techniques in handy. So what happens is, even during examination, even while studying for examination, बहुत बार ऐसा हो रहा है that because anxiety की problem is at its peak, you need to keep quick techniques in handy so that you can ground yourself in the moment and feel relaxed again. Next slide, please. Right. So here are a few of the grounding techniques that are there in front of you. The first technique is 5, 4, 3, 2, 1. So what we can do in this technique is, you can see 5 things around you, whatever you can find, whether you're in a room, whether you're outside, whether you're in an examination hall. Try to see 5 things around you.
4 things that you can hear, maybe students, maybe birds chirping outside, anything. 2 things you can feel, whether it's cloth, whether it's paper, whether it's pen, anything that is near you. 2 things you can smell. So smell of ink, smell of paper, whatever is there. And 1 thing that you can taste. So what happens with this is that, yeah, is it working? Yeah. Right. So what happens is that when you focus on these things around you, your body gets time to calm down again. Your mind gets time to calm down again. And your brain realizes that it's not exactly in danger, right? The next technique is square breathing. So you hold your breath for 4 seconds. You breathe in for 4 seconds. You again hold for 4 seconds and then you breathe out for 4 seconds. How it works is that when you breathe in intervals, it actually allows your body and your heart rate to return back to normal. And so that you can uh, carry out your process with ease. And the third technique is hold ice pack to either your wrist or your eyes. Eyes because they're very strained out, and they're very stressed. You are usually studying on either books or on your laptops or any other electronic device, and the blue light puts a lot of stress on your eyes. So hold an ice pack to your wrist or your eyes, and it works in the same way. When you hold something, when there's an outside stimulus, your brain focuses the attention on that thing, right? And there are many more grounding techniques available on the internet. You can refer to those as well. Next slide, please. And always remember, a calm mind is a powerful mind. If your brain is calm, it's serene. So what happens is that calm mind is like calm water. You can see everything, you can understand everything, and stress creates ripples in those water, and hence you won't be able to see things clearly. Next slide, please. So right now you probably look like this, holed up in a room with a lot of books. Your face, you're staring at the laptop or the material in front of you. And after you're done with your exams, how to get back to normalcy. So now when you're focusing on your books, and every single minute is important, the moment your exams are done, they're over. You have a bunch of time and you're not exactly aware as to what to do. Next slide, please. Yeah, and by being stressed for a long time alters the body chemistry. So let's recover from that. As Daksha ma'am also mentioned that when you're stressed for a very long time, your body is, get used to working on a fight or flight mode. And being on a fight or flight mode for a very long time isn't healthy for your mental health well-being as well, and your physical health as well. So let's look at techniques as to how to recover from it. Next slide, please. Yeah, so mental health after exams. The first thing you need to do is get active. So you have spent a long amount of time sitting and staring at the book, sitting and staring at the screen, and there isn't a lot of time where you can, get active for yourself, because getting active, exercising releases endorphins. And everyone knows it's a feel-good hormone. You'll feel good after exercising. Social connectivity. Now, what happens is, when I mentioned that every single aspect of your life gets, left behind when you are giving your exams. So reconnect with your friends again, go out with your family again, and mainly reconnect with everyone. As Sarika ma'am also mentioned that human beings are social animals. So this aspect of your life has to be in place as well. Give yourself a break from technology. As we mentioned that when you are staring at screens for a very long time, or you're focusing on a screen for a prolonged amount of time, the blue rays from the screen, from any device, affects your eyes. So taking a break from that, and taking a break from all of the things that are around you, which remind you of your exams, leave them away and focus on yourself. Focus on the hobbies you miss during exams. So this is something that I've noticed a lot, that whenever exam times are approaching,
you want to, all your creative side gets out, you want to paint, you want to do things, and you feel like you can't do those things because exams are there. Write them down, and then after your exams are done, you can focus solely on that. So you missed painting, you missed reading, you want to read a new book, focus on those things. So you have a list after your exams as to what you can do and how you can catch up on things or life before that. Bring your routine back. So what happens is that during exams, your routine consists of waking up, studying for a long amount of time, eating and sleeping also takes a backseat sometimes. So bring back your routine, try to wake up, do your uh, daily chores, and then focus on recreational activities. Recover from stress. So basically, when your exams are there, your fight or flight mode is on. Recover from that stress. All of that stress is accumulated in your body. Get active, get moving, do the things that you always wanted to do, and focus on your life in general. Next slide, please. So, mental health is not a destination, it's a process. So, every single step you take on a daily basis, every single thing you do amounts to mental health, because it's not a particular destination that, you know what, I slept for 8 hours today, my mental health is achieved. So, it's a daily thing. Do those things, take regular steps to ensure your mental health, and please, this is a sincere request. Do not hesitate in asking for help. A lot of times, what happens is during examinations, your stress level is increasing. You don't know whether you performed well on that exam or not. You're scared that you might not achieve the amount of percentage that you hope for. These things are usually out of your control. Focus on things that are actually in your control. So, your preparation, your mental health, your physical health, all of these things are in your control right now. So focus on those things rather than focusing on the part which is not in your control. Right. And so, would you like to add something in it? right. So this is my hope to all of you, that you focus on mental health. I hope your exams go brilliantly because you are brilliant little people. And I hope you take care of yourself. थैंक यू सो वेरी मच सौम्या। और अब हम अपने अगले एक्सपर्ट के पास जाना चाहेंगे, जो है डॉक्टर प्रतीक, और उनसे हम जानना चाहेंगे कि कोपिंग विद सक्सेस एंड फेलियर आफ्टर एग्जाम्स रिजल्ट, मेंटेनिंग इमोशनल स्टेबिलिटी, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। कि जब रिजल्ट आता है, उसके बाद रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, तो उससे कैसे कोप किया जाए, प्रतीक सर हम आपसे जानना चाहेंगे। थैंक यू मैम। आई होप माय वॉइस इज कमिंग टू योर साइड। यस सर। You have given me a very interesting thing. Actually, the thing that you have asked me, it will cover most of the thing that our other speakers have said. But apart from that, it has some other fundamental things to be discussed with my students, teachers, and parents. And when I'm telling students, teachers, and parents, believe it, it's a triangular game that we play all together. Everybody might be agree with this. It's a triangular game that we play together. When we feel about stress, when we talk about the exam pressure, when we talk about the success and failure, believe me, we are not only talking about student pressures. We are not only talking about the student's stress, the stress that accumulates over student life before the exam, during the exam, and after the exam. It is the output of the teacher, parent, and student. So I will start this thing from the talk that Madam Sarika has said, that role of parents and teachers. See, again, if we go to the understanding how to cope up with the success and failure, this cannot be cope up alone by the learners. Never. If we see that learners are at the center and they can cope up alone with this, believe me, it is not possible. We can do it together. It should be a combined effect, combined effort from teacher, parents, and student together. So, few questions that will lead my discussion further, that I'm asking to all my viewers, whether parents, teacher, or student, those who are listening us. You ask yourself, is the success only
thing that is required in a life? Yes, we believe that success is important up to some extent. I say it. But is it the only thing which is required in our life? And the second thing is that, is the failure is the ultimate thing that we have earned, that nothing exists after a failure? The answer is no. The answer is no. Why? Because if you'll see, most of the successful peoples, I'm giving this relevant example because those students, those who are listening us, they will try to relate it to the real life. You see, you go to the life story, autobiography, or biography of any successful people, even though those who have been a legend in our society, they have gone through lots of ups and downs. Because, my dear students, believe it, life is not moving in a linear motion. Never it happens. It never goes straight. Sometimes it goes up, sometimes it goes down. And there we believe the beauty of life we have. So when we say that we wanted to cope up the stress and these things, even the success or failure, few things I will share with you all. That especially when we are dealing about failure, I'm talking about failure first because most of people know that yes, we can cope up the success, that we will take later on. But firstly, let me take how to cope up the failure. See, suppose if you are not able to get what you are thinking before, that I may be getting 90%, I may be getting whatever you are thinking as a student. And this is to the parents also. You also have some expectation with your child. For some time, when the failure has come, for that instance of time, my suggestion is that keep it apart for some time. I never say that aspirations are bad, but we people sometimes take it more as it should not be taken. Therefore, few things I'm telling that we should do. First is review your attempts and actions. My dear students, this is a very important thing you can focus upon. Review your attempt and actions, that what mistake I have done. There may be some mistakes. There may be some loose points which you have not taken up for the success or for achieving what you want. So review your attempts and actions. And after this, the most important thing that I think right now the Soumya ma'am was also speaking, is stay calm. When anxiety is there are so many researches that I'm not going to quote here. They have established the fact that when a human being is undergoing in a process of stress or anxiety, their ability to think is not the way they think usually. Okay, so when you are having any kind of a stress, especially when you are having some kind of failure, stay calm. Stay very calm and in a very firm situation, think about the thing that furthermore best you can do. Because you have tried your one attempt and again you see, okay, I have not reached there, let me do something best and what further best I can do and add into that. This is the step number 3. And step number 5, which is very important, to live and sustain in the society, you have to be ready to reattempt it. Ready to reattempt. Why I'm telling ready to reattempt? See, students, when we are trying to achieve something, there is nothing certain that we will get it in one attempt. You can see the society, those who are successful people or those who have achieved something in the world, they have not achieved it in a one instance. It has a series of attempts. Therefore, the point is ready to reattempt. And next is, do not do any kind of self-harming. Any kind of self-harming. First thing is that whether mental, whether physical, or whether emotional, no kind of self-harming you will do. And here I will take emotional as a more important point, because you see, when we get our success, when we get our failure, 90% time, believe me, we are comparing it with others. How you say you are successful?
Most of the time we compare. So please, students, and especially to parents also, I'm telling you, avoid this comparison, because we are best in our capabilities. हम सभी अपनी अपनी क्षमताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, और ये समझना होगा किसी भी प्रकार के स्ट्रेस, किसी भी प्रकार की एंजाइटी को दूर करने के। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो इसी क्रम में मैं आगे बढ़ाऊंगा, कि अगर हमें किसी प्रकार का स्ट्रेस होता है, इस बात को समझने की जरूरत है। जब हमें स्ट्रेस होता है, हम बिल्कुल कंटिन्यूअस उस चीज को सोचते हैं, और ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज मैं बता रहा हूं, जैसा कि दक्षा मैडम, सारिका मैडम, अवनी मैडम सभी ने कहा कि स्ट्रेस इज अनअवॉइडेबल, and especially teachers also, please focus on this point. Stress is unavoidable. We can't just make it like that. It will come, because we are living in a competitive society. Everybody has their some aspirations, their objectives of the life, and once it fulfills, we say that yes, we are successful, and once it is not successful, we say that we have countered the failure. But the reality is not like this. So whenever you are going into this process of stress, the basic fundamental thing is that divert your mind. दिमाग को बटाना। आप सुनते होंगे घर में भी ऐसा, कई बार माता पिता कहते हैं या कोई और भी बड़े लोग कहते हैं कि अपने दिमाग को बटाना है, दिमाग को थोड़ा इधर उधर लगाना है। यहाँ दिमाग को लगाने का सेंस यही है कि लेट अस डू समथिंग मोर मीनिंगफुल। फॉर एग्जाम्पल, आप म्यूजिक सुन सकते हैं, और ये बहुत प्रैक्टिकल सी चीज है, इसे आप अपने जीवन में अपना सकते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर आप म्यूजिक सुने तो आपको ये लगेगा कि हाँ, कुछ मैं अलग सोच पा रहा था, बिकॉज स्ट्रेस इज समथिंग वी आर कंटिन्यूअसली फोकसिंग ऑन सम पर्टिकुलर इश्यूज। किसी एक ही बात पर हम बार बार चिंतन कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसा हो गया, ओके, व्हाट हैज बीन हैपन, दैट इज फाइन, बट व्हाट नेक्स्ट? लेट अस फॉरगेट इट, लर्न इट एंड मूव फॉरवर्ड। आप म्यूजिक सुन सकते हैं, क्योंकि जब हम हैप्पी होते हैं, हमारे अंदर कई तरह के डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्मोन्स पैदा होते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करते हैं। ऑक्सीटाइसिन, डोपामाइन, डिफरेंट कैडर्स ऑफ हार्मोन्स आर देयर। एंड व्हेन यू टेक स्ट्रेस, स्पेशली स्ट्रेस, द कॉर्टिसोल लेवल, इट इज द काइंड ऑफ अ हार्मोन जो आपकी बॉडी में अपने आप सोचने से बढ़ता है। जब हम इस चीज को समझ रहे हैं कि सोचने से कोई हार्मोन हमारी बॉडी में बढ़ता है और हमें तकलीफ पैदा करता है, यहां पर बात आती है, अब हम सोचना ही अलग तरह से करें। लेट अस थिंक लिटिल डिफरेंटली, और वो डिफरेंटली है कहीं म्यूजिक सुनना, कहीं पर आप कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं, एंड आई कंसीडर इट द बेस्ट वन। डू सम स्पोर्ट्स, इंडोर आउटडोर, एज पर योर कन्वीनियंस एंड चॉइस। नेक्स्ट चीज जो है इसमें, ये थोड़ा सा जो ट्रायंगुलर बात मैंने कही उसमें लेकर के है, यहाँ पर अभिभावकों की, पेरेंट्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है कि आप अपने बच्चे के फेलियर को अपना फेलियर ना माने। पहली चीज, कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम द स्ट्रेस। और आप इस चीज को महसूस करते होंगे, जो लोग इसको सुन रहे हैं वो भी सोचेंगे, ज्यादातर तनाव बच्चे से ज्यादा पेरेंट्स को है। हम तो मैच्योर हैं, क्या हम अपनी मैच्योरिटी, हम अपनी लर्निंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग से एक छोटे फेलियर को बिल्कुल क्या मिनिमाइज नहीं कर सकते? और मैं छोटा फेलियर इसलिए कह रहा हूं, देयर आर सो मेनी सर्टेन थिंग्स इन द लाइफ माय डियर दैट विल कम। लाइफ इज वेरी बिग एंड वी लिव द लाइफ इन अ पार्ट्स। हम अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं। एक दिन 24 घंटा, दूसरा दिन 24 घंटा, क्या पूरा जीवन एक ही पल में जिया जा सकता है? ऐसा संभव नहीं है। इसलिए सफलता और असफलता दोनों ही एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं। हाँ, ये जरूर बात है कि हमें अपनी सक्सेस पे फोकस करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए, ये हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बेहतर है। पर सवाल वही है जो सवाल मैंने शुरू में पूछा, क्या सफलता जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है? आप देखेंगे कई बार IITs के और PMTs के, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिजल्ट्स आते हैं, और आप देखें हम अपने बीच के होनहार विद्यार्थियों को केवल तनाव के नाते खो देते हैं। भविष्य में उनकी जो पोटेंशियल्स हैं वो नेशनल डेवलपमेंट में, स्टेट डेवलपमेंट में, सोशल डेवलपमेंट में यूज हो सकती हैं, पर हम कहीं न कहीं उनको खो देते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ सजेशन फ्रॉम माय साइड, डू नॉट हार्म योरसेल्फ एट एनी कॉस्ट, स्टे काम। अगली चीज,
जो मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, थोड़ा पेरेंट्स को लेकर के बहुत कॉन्शियस होने की जरूरत है, क्योंकि पेरेंट्स आज का जो बदलता हुआ स्वरूप है समाज का, इसमें बड़े प्रतिस्पर्धी भावना के साथ अपने बच्चों को बड़ा भी कर रहे हैं। ये हमें स्वीकार करना होगा, हम सभी पेरेंट्स हैं, इस बात को महसूस करते हैं। बेटा तुम्हें फर्स्ट ही आना है, ऐसा कोई स्पेसिफिक लिखी गई बात नहीं है। तुम सेकंड भी आ सकते हो। क्यों? मैं अभी एक उदाहरण दूंगा जिससे मेरी बात आपको थोड़ी और आसानी से समझ में आएगी। सक्सेस इज अ मैटर ऑफ योर कंसर्न, योर कॉन्शियसनेस। जिस चीज को आप सक्सेस कहते हैं, हो सकता है कोई दूसरे आदमी या दूसरा व्यक्ति उसको सक्सेस की तरह कंसीडर ना करे। और ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज वी हैव टू डाइवर्ट आवर माइंड फॉर सम इंस्टेंस ऑफ टाइम। एक उदाहरण के तौर पर आप देखें, जब यूपीएससी जो कि हमारे नेशन का सबसे प्रेस्टिजियस, वन ऑफ द बेस्ट एंड toughest exam, we say it is there, and the people, those who are qualifying it, you can see it. You go and review the interviews of the successful student qualifying UPSC. If you will see their career graph, it is going from down to up. There are so many students, those who are third division, second division, even though they pass with compartment in their 10 and +2, even in their graduation exams also. But they succeed and compete in the one of the best examination in the nation. इसको बहुत ही कंक्लूसिव वे में मैं कहूंगा, विद्यार्थियों के लिए, पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए, जीवन किसी एक पड़ाव से परिभाषित नहीं होता। जीवन के बहुत सारे पड़ाव हैं और सफलता हमेशा yet to come होती है। We can develop, we can grow with the growing in our lifespan. हम मैच्योर होते हैं। जो अंडरस्टैंडिंग हमारी 10th क्लास में रही, उससे बेहतर अंडरस्टैंडिंग हमारी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे होती है। इट इज साइंटिफिकली प्रूवन। सो लेट अस वेट फॉर सम टाइम। यस, यू हैव काउंटर्ड द फेलियर बट ट्राई टू ओवरकम विद दिस थिंग्स। और अंत में एक बात और कहूंगा जो मैंने शुरू में छोड़ी, अब उसे ले रहा हूं। असफलता को काउंटर करना है, बहुत जरूरी बात है। वी हैव टू कोप अप द फेलियर एंड वी हैव डिस्कस्ड दैट आल्सो। उससे जरूरी बात है आप अपनी सफलता को कैसे कोप अप करते हैं। विश्वास कीजिए, सफलता जीवन में कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। आप एक सफलता के बाद दूसरी सफलता की ओर देखते हैं, और दिस इज द बिटर रियलिटी ऑफ द लाइफ, बिकॉज वी आर लिविंग इन द सोसाइटी लाइक दिस। देयरफॉर few things I will tell you to again how to cope up with your success. First thing is that what you have done, that is very good and that is only for you. First thing, इसे जरूर याद रखें, आपकी कोई भी सफलता, उसका दायरा बहुत सीमित है। वो आपके लिए बेहतर है, आपके परिवार के लिए बेहतर है और आपके गुरुजनों के लिए बेहतर है। इसलिए उस सफलता को ऐसा ना समझें कि मैंने बहुतों को हरा दिया है या मैंने बहुत अच्छा किया है, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। दूसरी चीज, एवरी सक्सेस हैज अ डिफरेंट साइड टू ग्रो। ये हमेशा होता है। आपने कुछ अच्छा अचीव किया है, आप अगर खुद को देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं और बेहतर क्या कर सकता हूं। ऑप्शंस आर देयर एंड दैट यू कैन थिंक एंड डू मोर बेटर एंड बेटर। और जो सफल हैं, मैं उनसे एक बिल्कुल बड़ी जरूरी बात कहूंगा, खास करके अपने विद्यार्थियों से। अपने किसी भी मित्र को, अपने किसी भी साथी को, टू एनी ऑफ योर पीयर ग्रुप्स, नेवर लेट देम डाउन फ्रॉम योर साइड। कभी भी उनको छोटा महसूस ना कराएं। टेक देम टुगेदर। दिस इज द स्पिरिट ऑफ द लाइफ, दैट ओके यू हैव नॉट डन, यू विल डू इट अगेन, लेट मी हेल्प यू। इस स्पिरिट की जरूरत है, और तभी हम सक्सेस और फेलियर इन दोनों को एक साथ काउंटर कर पाएंगे। तो इस बातों के साथ मैं एक बात अंत में और कहूंगा जी। जीवन में सफलता और असफलता बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, पर यकीन मानिए जीवन के लक्ष्य और भी हैं। किसी एक परीक्षा में पास होना या फेल होना सिर्फ पर्याप्त नहीं है। हाँ, हमें इस पर भी सोचते रहना चाहिए जी। थैंक यू सो वेरी मच सर। आपने इतने अच्छे से हमारे सभी व्यूवर्स को बताया
कि सफलता और असफलता को किस तरह से कोप अप किया जा सकता है। और सक्सेस एंड फेलियर इट मे वेरी पर्सन टू पर्सन। किसी बच्चे के लिए 60 और 70% मार्क्स सक्सेस होना हो सकता है और किसी के लिए 99% मार्क्स भी मे बी इट्स अ साइन ऑफ अ फेलियर। तो इट मे वेरी पर्सन टू पर्सन। वी स्टिल हैव कपल ऑफ मिनट्स। सारिका मैम, हम यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे टू कंक्लूड द सेशन मैम। जी थैंक यू डॉक्टर रेणु जी। और सभी पैनलिस्ट ने बहुत अच्छे से इस बात के बारे में चर्चा की है कि जो परीक्षा के समय जो स्ट्रेस होता है और उसके बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं। मेंटल हेल्थ क्या होती है, एंजाइटी क्या होती है, स्ट्रेस क्या होता है, और उस दौरान में हमको उसको कैसे इंटैक्ट रखना है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और हमारी बॉडी में उस समय पर कौन कौन से चेंजेस होते हैं। अगर हम तनाव लेते हैं तो जैसे कि हमारे प्रतीक सर ने बताया कि कॉर्टिसोल जो है वो हमारी बॉडी में रिलीज होता है और उस वजह से हमारी जो बॉडी के लिए वो अच्छा नहीं होता है। और जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, रिलैक्स होते हैं या हम ऐसा कुछ काम करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, तो हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो हमारी इन टोटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और सारी बातों के साथ हमने ये तो जाना कि ये सिर्फ एक समय होता है। परीक्षा का जो समय है वो सिर्फ एक समय होता है, वो जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं होता है। और जीवन का हर दिन एक नया दिन होता है और उस हर नए दिन को हमें उतने ही उत्साह और ऊर्जा के साथ जीना चाहिए। अगर सफलता भी हमने प्राप्त की है, अपनी मनचाहे परसेंटेज भी प्राप्त किए हैं, उसका भी हमको हैंडल करना आना चाहिए। और अगर अपने मनचाहे परसेंट भी हमने प्राप्त नहीं किए हैं तो उससे हैंडल करना भी हमें आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें जो सारे पैनलिस्ट ने कही है वो हमारे विद्यार्थियों के लिए, परिवार के लिए और सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और आज की परिचर्चा सभी को इस एग्जाम के स्ट्रेसफुल टाइम में थोड़ा सा रिलैक्स जरूर कराएगी। जी मैम, मुझे भी पूरी उम्मीद है कि हमारे जितने भी व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े, जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े, ये पूरी परिचर्चा उनके लिए बेनिफिशियल रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पैनलिस्ट का कि आप हमसे जुड़े और आपने हमारे इस सेशन में इतनी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव बातें उन सभी के साथ शेयर की जो उनके लिए अभी इस वक्त जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। और अपने सभी देखने वालों को हम कहेंगे कि हम बात कर रहे थे मनोदर्पण परिचर्चा में फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ सिग्निफिकेंस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एग्जामिनेशन पार्ट सेकंड। इस टॉपिक पर आप हमारे साथ बने रहे। थैंक यू सो वेरी मच कि आप पूरे सेशन में हमारे साथ बने रहे। और इससे पहले कि मैं ये सत्र यहाँ पे समाप्त करूँ, एक बहुत ज़रूरी सूचना आपके साथ साझा करना चाहेंगे रिगार्डिंग इंडियाज़ G20 presidency. We are indeed very proud that India assumed G20 presidency and will convene the G20's Leaders Summit for the first time in the country in 2023. A nation that deeply committed towards democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all. And in doing so, manifests the true spirit of Vasudhaiv Kutumbakam, or we can say the whole world is one family. With that very important piece of information, me Renu Bhatt along with my whole team is taking you leave. But आप बने रहिए eVidya channel और NCERT official YouTube channel पर। नमस्कार।